हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़िया मल्टीवेरिएबल कैलकुलस रो कोन डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन। ठीक अछि। लिमिट्स फॉर वन वेरिएबल फंक्शन पाई हला लिमिट x टेंड्स टू a and f of x equal to l as x approaches to a and f of x is approaches to l। तेबे कोन डेफिनेशन कोन डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन फॉर every epsilon is greater than 0 there exit a corresponding a real number delta is greater than 0 such that f of x minus l all modulus is less than epsilon whenever 0 is less than x minus a modulus is less than delta हवा। और आ गोटे मते डेफिनेशन कोन for all is कोन epsilon is greater than 0 their exit is delta is greater than 0 such that f of x minus l is modulus is less than epsilon whenever 0 is less than x minus a modulus is less than delta and modulus property kana modulus property mod x is less than delta hele edo minus delta is less than x less than delta हवा। देन एटा प्रॉपर्टी टा पके देली मॉडुलस प्रॉपर्टी माइनस डेल्टा इज लेस देन x माइनस a लेस देन डेल्टा। देन कहते a माइनस डेल्टा लेस देन x प्लस डेल्टा। ठीक अछि। यार डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन टा ता सहित किछि प्रॉब्लम मध्ये करिवा। सेमती f of x minus l is modulus is less than epsilon हबो ताले epsilon सेमती modulus property minus epsilon is less than f of x minus l is less than epsilon सेमती जदी l हम सब जगह रे मिसे देबा ताले केते l minus epsilon is less than f of x is less than l plus epsilon then केते हैला f of a minus delta and a plus delta मध्ये is less than or equal to l plus epsilon and l plus l minus epsilon and l plus epsilon हवा। ठीक अछि। एग्जांपल गोटे करिवा लिमिट x टेंड्स टू 2 नेबा तबे 2x plus 1 equal to 5 केते लिमिट x टेंड्स टू 2 2x plus 1 equal to 5 एटा कोड डेफिनेशन करिवा डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन याको प्रूव करिवा। ठीक अछि। लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 इज गिवन 2x plus 1 5 एटा l अछि सेपरे धरि पळेबा तल -5 इज मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन। ठीक अछि। हम जंती सेटा जंती हम डेफिनेशन करथले एटा भी समिति हम करिवा जे l अछि तले x minus l हबो एटा जंती f of x minus l then f of x minus l is modulus less than epsilon एटा फेडिले केता हैला x minus 2 0 whenever 0 less than x minus 2 माने x minus a एटा x टेंड्स टू 2 माने एटा a हैला 2 देन समिति x minus 2 हे जिवो x minus 2 मॉडुलस इज लेस देन डेल्टा। ठीक अछि। समिति हम एटा उधर की जिवा 2x plus 1 minus 5 इज मॉडुलस इज इक्वल टू एटा +1 minus 5 गेले केते -4 देन 2x minus 4 मॉडुलस 2 कॉमन देन 2 into x minus 2 मॉडुलस 2 बाहर काले केते 2 into x minus 2 then x minus 2 equal to हमें काटी थिले x minus 2 is less than to delta then या सहित जदी से less than delta होची ताले या टोटल सहित मते less than delta हबो then less than 2 delta। ठीक अछि। choose कोन 2 delta is less than epsilon then delta is less than epsilon by 2 ताले यार वैल्यू हमें मिल गेला ताले 2x plus 1 minus 5 is modulus is less than epsilon by 2 epsilon by 2 चूज करले। ठीक अछि। एंदे हमें प्रूव करिवा। समिति लिमिट फॉर टू वेरिएबल फंक्शन पाई डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन पाई देखिया we say that f approaches the limit l as f of x approaches to x0 y0 if the value of f of xy lies arbitrary close to a fixed real number l for all xy that are sufficiently close to x0 y0 then f xy is approaches to l as xy approaches to x0 and y0 सेटा जेमिति एटा भी सेमिति देखो डेफिनेशन सेमिति डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन टा
or on a limit xy tends to x0 y0 approaches to x0 y0, then f of x is equal to L for all epsilon is greater than 0, there exit a corresponding the real number delta is greater than 0 such that f of xy is minus L modulus is less than epsilon whenever 0 less than root over of x minus x0 whole square plus y minus y0 whole square less than delta habo या एमती लिखि परिया नचेत आ गोटे लिखि परिया और कौन f of x minus L is modulus less than epsilon whenever 0 less than x minus x0 less than delta and 0 less than y minus y0 mod less than delta एमती मध्ये हमें लिखि परिया कौन जानले एटा कौन ना f of x फंक्शन टा f of x and y एठे भी अछि f of xy फंक्शन एटा ठीक अछि f of xy is equal to जदि L हला लिमिट xy tends to x0 y0 हबो f of xy तबे से देथिबो कोन गला एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 दे आर एक्सिट कॉरेस्पोंडिंग त अर्थ f of xy minus L is less than epsilon ठीक अछि से देथिबो कोन whenever x minus x0 is less than delta and 0 less than y minus y0 less than delta एटा से देथिबो हमको एटा प्रूव करिवार अछि सेंदे हम प्रूव करियो दैट लिमिट प्रॉपर्टी कोन अछि limit xy tends to x0 y0 and f of xy is equal to L thibo and limit xy tends to x0 y0 g of कोन xy then equal to m नबा एडी यार वैल्यू L ले यार वैल्यू मन करा m नबा तबे between limit xy tends to x0 y0 तबे f of xy plus or minus g of xy is equal to L plus or minus m भी हो तार अर्थ कोन ना जदि लिमिट रे f of xy plus g of xy होबो तार यार वैल्यू हम जानि छ L plus m हबो समिति जदि माइनस थिबो ताले कोन L minus m हबो सेंदी सेकंड प्रॉपर्टी लिमिट xy tends to x0 y0 तबे f of xy into g of xy तबे यार वैल्यू हम जानि छ L into m ठीक अछि समिति लिमिट xy tends to x0 y0 तबे k into f of xy k is a constant then k टा बाहर पळेबो तने यार लिमिट इक्वल टू हम जानि छ L प्रूव हे गेला 74 लिमिट xy tends to x0 y0 तबे f of xy by g of xy इक्वल टू यार वैल्यू हमको जणा अछि देन L by m ठीक अछि यार प्रॉपर्टी हम जानि देले एंदी किछि एग्जांपल भी करिवा ठीक अछि using delta epsilon definition so that limit xy tends to 1 and 2 then 2x plus y equal to 4 हमें f of x and y मिल गला 2x plus and L equal to मिल गला 4 and x0 equal to 1 y0 equal to 2 then let epsilon is greater than 0 be given 2x plus y minus 4 is modulus less than epsilon whenever 0 less than root over of x minus 1 रो whole square plus y minus 2 रो whole square is less than delta ठीक अछि किंबा याको हम एमति मते लिखि परिबा ए डेफिनेशन भी हेबो नले ए डेफिनेशन भी हेबो 2x plus 1 minus 4 is modulus less than epsilon whenever 0 less than x minus 1 modulus is less than epsilon and 0 less than y minus 2 modulus less than epsilon हबो ठीक अछि ए दिटा भीतर कोडा ले गुटे पकेउ पडियो प्रॉब्लम देखिकरी ठीक अछि समथि 2x plus y minus 4 is modulus is equal to 2 into x minus 1 plus y minus 2 ठीक अछि एटा मु ए जो 4 अछि या 4 को मु भांगी देली ए 4 को कोन करले मु भांगी देली केमते भांगीबी 2x plus y minus 2 and minus 2 या को धरि के मु करले कारण 2 कॉमन काट देली तले 2 into x minus 1 plus 1 कॉमन करले केते 1 into y minus 2 ठीक अछि सेमते हला गुणी देले केते 2x plus y and minus 2 ऊपरटा जा ता लिखि देली सेमिति कते 2x minus 2 and y minus 2 then एटा भी सेंदे 2 कॉमन एटा जा हम ता प्रूव करिवा 2 into x minus 1 plus y minus 2 तबे एटा 2 टोटल कॉमन कर देली तले कते x minus 1 plus y minus 2 modulus प्रथमे जानि छ x minus 1 is less than delta then total is equal to less than delta
2 delta plus एटा भी सेमती y minus 2 less than delta then या जदि less than delta हला then ए टोटल टा मते less than delta हो less than delta 2 delta plus delta equal to 3 delta choose that 3 delta is equal to epsilon then delta equal to केते epsilon by 3 then केते और epsilon value मिली गला then 2x plus y minus 4 is modulus less than epsilon by 3 ठीक अछि ओके थैंक यू